सबको स्क्रीन नजर आ रहा है, राइट? जी। ठीक है, परफेक्ट। अच्छा, हम कहाँ थे? हम क्या, ओके, सो वी वर सेइंग के we want to find out the expected number of inversions in the array. An inversion is basically any index I smaller than j जहाँ I की value जो है j से बड़ी है, so I j से पहले आता है, so any index that comes before another index लेकिन उसकी value बड़ी है, ठीक है। फिर हमने कहा कि we want to find out the expected number of inversions. We're going to represent the number of inversions as a discrete random variable, ठीक है। uh, and then we said, Kacha, we're going to divide up this variable into smaller variables, xi, where xi represents the ith pair, and the xi ka jo variable hai, it's an indicator variable. You can take on the value of 0 or 1, and 0 is if it's not inversion, and 1 is if it is inversion. And so simply x depends upon uh, all the pairs. Let's say there's k pairs. Okay, k is simply n multiplied by n minus 1 divided by 2. So that's what k is. For simplicity, ताकि मुझे लंबा लंबा लिखना ना पड़े, we're just going to call this k. Uh, अच्छा, तो x depends upon the summation of I till k. I is equal to 1, एक तो यार, हाँ, ठीक है. So x depends upon the summation. यहाँ तक everyone follows या किसी को कोई सवाल है? ठीक है. So this is basically saying कि we're gonna ask each pair क्या तुम 0 हो या 1 हो. If you are a 1, you get counted to the sum of total number of inversions. X represents the total number of inversions. So you just count out each indicator variable क्या तुम 0 हो या 1 हो. होगा तो 1 हो जाएगा, count हो जाएगा. ठीक है. So now we just have to apply the same logic. E of x is going to be the E of this pura sum. I'm not writing it down. And then we can write it as simply बाहर ले आओ linear expectation से. We know that each of these random variables is equal, and any given xi has an equal chance of being an inversion या नहीं inversion. उसकी मैं आपको explanation दिखाता हूँ अभी आगे. उसकी logic क्या है. So we'll see why each given pair has an equal chance. तो हमने इसको बाहर लिया है, इसको लिख लेता हूँ यार, एक्स आई. तो ये बाहर आ जाएगा 1 till k, और अंदर क्या रह जाएगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स आई. So given any pair, what is the chance that it is inversion? So if I pick out a random pair in my permutation, मैंने कोई भी इंडेक्स उठाया, फर्स्ट और लास्ट उठाया, सेकंड और थर्ड उठाया, कोई भी उठाया, और this is a shuffled array, what is the chance that this is inversion as opposed to this is not inversion? Does anyone guess? Does anyone think they know the answer? Acha, do you think it's going to be 50-50 or it's going to be different? So Saad says half. So yes, half is the answer. We'll see. So intuitively अगर सोचो, कुछ लोगों को लगता है कि हाँ या तो बड़ा होगा या छोटा होगा, लेकिन you have to think कि अच्छा उनकी पोजीशंस बदली हैं, तो हो सकता है कुछ पोजीशंस में ज़्यादा चांस हो सकता है कि पहले और दूसरे में ज़्यादा ऐसे चांस हो गए, एक बड़ा हो गया दूसरा बड़ा होगा. We'll see exactly why this is a perfectly 50-50% chance. So first let's see what this depends upon. So हम क्या करेंगे, we're going to consider all the possible permutations. ठीक है. अब now let's say you had 4 numbers, 1 2 3 4. I'm going to cover this because this isn't super relevant to the topic, but just so that people know, understand, like they understand why this is exactly half. और बाद में एग्जाम में ऐसा कुछ हुआ तो हर जगह हाफ में प्लग इन कर देना. So that's why you need to know this. तो let's say you have a simple array 1 2 3 4, इसको shuffle किया गया. जब shuffle करते हैं you get permutations. Now what are the possible permutations? They're actually going to be 4 factorial permutations. I hope everyone remembers what 4 factorial means and why this is 4 factorial. Because पहली जगह अगर आप array fill करते, randomly fill कर रहे होते, तो पहली जगह 4 लोग आ सकते हैं, दूसरी जगह 3, दूसरी जगह 2, फिर 1. That's how the permutations are computed. Let's say I'm going to draw out all the permutations. ठीक है ना? This is me saying, अच्छा, these are all the possible permutations. ठीक है? Now, if I take any random permutation, what I'm going to do is I'm going to consider one specific pair. ठीक है? I'm going to consider the pair uh, I J कौन सा कर रहे हैं हम? We're going to check 2, 7. थोड़ा साफ लिख देता हूँ इसको.
2,7. So I am checking the index 2 and index 7 पे उन दोनों को उठा रहा हूँ और मैं कह रहा हूँ कि क्या इसकी वैल्यू इससे बड़ी है या नहीं. अगर दिस यहाँ पे ए आएगा, यहाँ पे बी आएगा, ठीक है. सो इंडेक्स 2 पे ए है, इंडेक्स 7 पे बी है. आई एम सेइंग इज ए ग्रेटर देन बी. नाउ इफ आई गो थ्रू ऑल द परम्यूटेशंस, ठीक है, एंड आई चेक इंडेक्स 2 एंड 7, ठीक है, एंड आई एम गोना से अच्छा इसके अंदर वैल्यू क्या हो सकती थी. फर्स्ट लेट्स फिक्स द वैल्यूज ऑफ 2 एंड 7. लेट्स से इसको जब चेक किया तो इनके अंदर जो वैल्यूज थी देयर वर लेट्स से 1 और 6 थी, ठीक है. तो 1 or 6, let's see what is the chance that this is on 1 or 6 as opposed to a 6 or 1, ठीक है. We're going to notice that if I check the 2 and 7th location in all of the permutations, the chance of it being a 1 and 6 and it being a 6 on 1 is perfectly equal. And that's obvious because go through all the permutations, look at every permutation that had 1 and 6. यानी 1 और 6 को लॉक कर दो कि दूसरे डब्बे और सातवें डब्बे में 1 और 6 था. इन सब लोगों को जितना भी जंबल करना है जंबल कर लो. There is going to be a mirror or like a pair for this where हर जंबल पॉसिबिलिटी के लिए वहां पर 6 और 1 भी हो सकता था. तो यहाँ पर 1 6 फिक्स किया, यहाँ पर मैंने कुछ भी लिख दिया. आई कैन डू द सेम थिंग, सब लिखो, यहाँ पे 6 और 1 कर दो. सो फॉर एनी परम्यूटेशन जहाँ पे यहाँ पे 1 और 6 आता है, देयर इज अ मिररिंग परम्यूटेशन जिसके अंदर 6 और 1 आता है, बाकी हर कोई चीज सेम रहती है. there's like a mirroring in the permutations, right? So I can say यहाँ पे 1 आया, यहाँ पे 6 आया, यहाँ पे कुछ भी आ जाए, there's gonna be another permutation जिसके अंदर exact same चीज होगी लेकिन यहाँ पे बस 6 और 1 होगा. So the chance of this guy being a 1 and 6 is exact same as this guy being a 6 and 1. ठीक है. The chance is very small कि यहाँ पे 1 और 6 आया, वो that can depend on a lot of things. लेकिन the chance that it's a 1 or 6 as opposed to a 6 or 1 is equal. ठीक है. Now यहाँ पे जितने भी पेयर्स आ सकते हैं, कितने पेयर्स आ सकते हैं? 1 2 1 3 1 4, there's any pair, जितने भी लूँ, 1 और 6 हैपनिंग का चांस इक्वल है, 2 और 6 हैपनिंग का चांस इक्वल है, 3 और 6 हैपनिंग का चांस इक्वल है, सबके चांसेस इक्वल है. सो ऑल ऑफ द पेयर्स दैट, सो इन दोनों का, नाउ लेट्स स्टॉप लुकिंग एट, now let's stop hard coding 1 and 6. It doesn't matter what was in the second index and the seventh index. Whatever it was, there's going to be a pair for it. So the equal chance of each guy happening. Now, जो भी मैं पेयर उठाऊंगा या तो उससे बड़ा होगा या उससे छोटा होगा. ठीक है. If I take any two numbers, we're saying they're distinct numbers. So if I take any two numbers in all my permutations, one of them is either going to be bigger, one of them is either going to be smaller. थोड़ा सा मिलती जुलती बात है जो ऊपर मैंने साहब के आंसर से कहा था कि हाँ या तो बड़ा होगा या छोटा होगा, लेकिन होपफुली आप लोगों को समझ आ जाएगा कि वाई इफ यू चेक ऑल द परम्यूटेशंस एंड यू चेक एनी फिक्स्ड इंडेक्स, उसके अंदर जो वैल्यूज आएंगी और दे कैन बी इधर 1 और 6 और 6 और 1, एंड इन वन केस बड़ा होगा, दूसरे केस में छोटा होगा. ठीक है. और मैं सारे पेयर्स को चेक करूँ, हर पेयर में एक छोटा वाला होगा, एक बड़ा वाला होगा. सो देयर इज, इफ आई टेक एनी गिवन पेयर, the probability of him being larger or smaller, like inversion not version, is the same. Because for each pair जिसके अंदर रिवर्जन था उसको फ्लिप कर लो, वो भी पेयर उतनी प्रोबेबिलिटी से मिलेगा. ठीक है. So now we'll see के हाँ, so now we're done with the answer. So the expected number of permutation, sorry, the expected number of inversions E of x is simply going to be इसका आंसर which is 0.5. ठीक है. So this was जितना explanation की मैंने, that was all just explain के E of xi की वैल्यू क्या है. तो xi represents के whether pair I is an inversion, and we just found out that the expected value of xi is 0.5 because the chance of it being inversion as opposed to not being inversion is 0.5, and 0.5 divided times 1 कर रहा हूँ because एक होगा 0.5 times 0, दूसरा होगा 0.5 times 1, summation करूँगा तो E of xi आ जाएगा. So E of xi is simply going to be 0.5. And I'm going to say that all of the pairs have an equal, they have the same expectation. Each pair has the same expectation or the same chance of being an inversion. So I'm just going to sum this across all k pairs. So I'm going to have how many k pairs? Well, k, for now we just write k. So we're going to have 0.5, 0.5, 0.5. So we're going to sum 0.5 plus 0.5. Kitni dafa? K dafa. So the answer is simply k times 0.5 is equal to the expectation of x. And k is n times n minus 1 upon 2 times 1 upon 2 is going to be n times n minus 1 upon 4. So the number of inversions on average is n times n minus 1 upon 4. किसी का कोई सवाल है? Then we can move. अगर नहीं है, we can move on to the last question. The last question is actually
like it's a little tougher. अभी तक तो it's fairly simple math. उसमें थोड़ी सी computational complexity या runtime analysis भी होगा. अगर कोई सवाल नहीं है, we can move on. Could you please repeat n times n minus 1 upon 2? Okay, sure. So, Kasha, we were discussing why there are n times n minus 1 upon 2 pairs. Because an inversion depends on any pair. तो मैंने आपने शुरू में कहा था ना कि the simple way of checking the number of inversions is हर इंडेक्स को विजिट करो starting from the starting, लेफ्ट से शुरू करो, ठीक है. हर बंदे को हर दूसरे बंदे से पूछो. So this guy is going to ask all the people in front of him. This guy is going to ask all the people in front of him. This guy is going to ask all the people in front of him. So I'll only have to check this और इस बंदे को नहीं पूछना अपने आगे वाले बंदों से क्योंकि इसके आगे कुछ है ही नहीं. So n minus 1 दफ़ा लूप चलेगा, हर बंदा उससे मजीद अगले वाले बंदे से पूछ रहा होगा. So we're basically seeing कि how many pairs can there be made, ठीक है. फिर इससे पूछा जाएगा, ठीक है. तो if you ever want to find the number of pairs, it's simply nc2 अगर आप लोगों को आता हो n times n minus 1. This is simple. This is the simplest way to look at it. If you don't know what nc means, don't worry about it. It's simply combinations of two, which is basically what are the different ways of making a pair. So Akasha, this is simply saying that if I had to count out the number of inversions, I would simply say that each person is going to check अपने अगले वाले बंदों से. So the first person is going to check n minus 1 people. The second person checks n minus 2 people, n minus 3, all the way up till 1 person. So if I sum that up, it's simply 1 plus 2 plus 3 all the way till n minus 1. A level के मैथ से आपको याद है, this is a geometric series, पता नहीं क्या कहते थे, geometric या arithmetic series. The summation of this is going to be this multiplied by n, so this plus 1 upon 2. So it's simply n times n minus 1 upon 2. So this is us counting the number of pairs that we have to check for being inversions. And we found out that there are exactly n times n minus 1 divided by 2 pairs. Each pair can either be or not be an inversion. So we have to go through each of them and see कि अच्छा तुम inversion हो या नहीं. So if I was going to find out the total number of inversions and I wanted to find out the expected value of the number of inversions, I would have to ask each uh, pair individually क्या तुम inversion हो या नहीं हो और तुम्हारी expected value क्या है. So then we said the expected value of the total number of inversions, which is E of x. So the E of x depends upon the summation of सबके E of x. So xi represents कि अच्छा is the ith pair inversion or not. So the total number of inversions depends upon each individual pair being inversion or not. And so then we said कि अच्छा so the total number of inversions depends upon, so the expected number of inversions depends upon the expected value of the sum of all the xi's. And then using linearity of expectation, we took the summation outside. We said we'll just sum up all the expectations. So individually हर variable से पूछो तुम्हारी expectation क्या है, तुम्हारी expectation क्या है. Each pair has the same expectation of it being an inversion, which is exactly 0.5. So any given pair, the expected value of it being an inversion is 0.5. And then we're just going to sum that up over all the pairs. And there are k pairs where k is n times n minus 1, as we just saw. And so that's where we got n times n minus 1 upon 4. Did I answer your question? Perfect. किसी कोई और सवाल? Okay, this is the कितनी देर हो गई हमारे ट्यूटोरियल को? I'll try to wrap this up quickly. ठीक है. So yeah, we can ignore the question. I'll just say it verbally. So we have, the question is related to balls and bins. A lot of you might already know this अगर आप लोगों ने CLRS या दास गुप्ता के जो algorithms वाली book है उसके अंदर I think ये पढ़ाया गया है. So the problem is simple. You have n balls that you're going to throw into bins. ठीक है, जिस तरह कार्निवल के अंदर गेम होते हैं ना. So you have bins के अंदर आपको फेंकने हैं. How many bins do you have? You have b bins, ठीक है, and you have n balls, ठीक है ना, and you're going to throw each ball and it has an equal chance of landing in a bin. सही है, अभी तक क्वेश्चन सबको समझ आ रहा है? What we want to find out is, the first question is what is the expected number of balls in a bin after a single throw. So if I make a single throw
what is the expected number of balls in a bin? So I have B bins. I can think of this as an array where there's I can label them 1 till B, and I throw a ball. यहाँ पे गई या तो यहाँ पे गई या तो यहाँ पे गई, कहीं भी जा सकती, किसी एक जगह जाएगी. The chance that it goes here is exactly कितना? 1 upon B. I'm throwing a single ball. यहाँ पे कितना chance है? 1 upon B. So what is the expected number of balls that goes into this box? Actually, no. So yeah, not a single ball. If I throw n balls, if I threw n balls into the bins, if I take any random bin, what is the expected number of balls that will be in this bin? So we're going to use the same idea. X represents the number of balls in let's say we're considering the first bin. So x represents the number, because any किसी भी bin को उठाओ एक ही expectation होगी obviously. So we're gonna say अच्छा we're gonna check the first bin, and x represents the number of balls in the first bin after we have thrown n balls. सारी ball हमने फेंक ली. हम देखना चाह रहे हैं कि अच्छा पहला वाला जो bin था उसके अंदर balls कितनी आई और उसकी expected value, average value क्या है. So x depends upon, let's write this, number of balls in bin 1 after n throws. ठीक है. So x is going to depend upon what? अगर इसको हम तोड़ना चाहें linearity of expectation पे तो हम क्या करेंगे? We are making n throws. xi will represent whether the ith throw threw a ball into ball bin 1 या नहीं. तो bin 1 के अंदर गई या नहीं गई. तो अगर नहीं गई तो 0, अगर गई तो 1. Again, we're using integrated variables, very useful to find out the linearity of expectation. अगर मैं अब x को निकालना चाहूँ, so I can say x is simply the summation of 1 till क्या होगा? n of xi, where xi represents whether or not the ball went into bin 1 after the ith throw, on the ith throw. We're going to make n throws, and for any given throw the expected number of balls in bin 1 is the same. अच्छा, मैंने जब पहला थ्रो किया, on average how many balls do I expect for it to go into it? तो या तो 0 होगा या 1, लेकिन उसकी expected value क्या है? xi represents the expected number of balls that go into bin 1 after I throw a ball. तो एक सिंगल थ्रो कर रहा हूं मैं, ठीक है. And I'm going to ask you कि अच्छा what is the expected number of balls that go into this? Obviously the value is going to be 0 1, but the expected number of balls that goes into this is 1 upon b. I can show you that by linearity expectation, sorry, by simply applying the expectation formula. लेकिन I'm assuming आप लोगों को सबको समझ आ गई वो expectation कैसे काम करता है. So we'll just go on with the assumption or the answer के xi is simply 1 upon b. Does anyone understand ये 1 upon b क्यों है? किसी को नहीं समझ आया तो पता है. Remember, xi represents the number of balls that go into bin 1 when the ith throw is made. It can either be a 0 or a 1, but the expected number of balls that go, or expected number of balls that go into bin 1 on the ith throw is going to be 1 upon b. सबको समझ आया क्यों था? किसको नहीं समझ आया तो मैं समझा सकता हूँ. ठीक है, आई होप सबको समझ आ रहा है कि एक्स आई क्या रिप्रेजेंट करता है, एक्स क्या रिप्रेजेंट करता है. ठीक है, तो सो वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट एक्स, वेयर एक्स रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ बॉल्स दैट गो इनटू बिन 1. ठीक है, हमने कोई भी बिन उठा लिया, कोई भी बिन उठा सकते थे, हमने फिलहाल के लिए बिन 1 उठाया, बाकी सबकी सेम ही होगी. तो बिन 1 के अंदर व्हाट इज एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ बॉल्स दैट गो इनटू बिन 1 आफ्टर n थ्रोज इज सिंपली गोना बी n टाइम्स 1 upon b. 1 upon b क्या था? The expected number of balls that go into any arbitrary throw. So n times 1 upon b is going to be n upon b. So after n throws, I can expect n upon b balls to have gone into the first one. और ये आप intuitively average के भी देख सकते हैं. Let's say there were 4 bins. ठीक है, तो ठीक है,
और आपने जो है कितनी बॉल्स फेंकनी थी, 64 बॉल्स फेंकनी थी. नाउ इंटुइटिवली फ्रॉम द मैथ वी लर्न, वी नो कि अगर मैं इसको फेंकूं सारी बॉल्स को ऑन एवरेज किसी भी बिन के अंदर कितनी होगी, 16 होंगी, है ना. अगर मैं इन्फिनिट ट्रायल्स करूं तो ऑन एवरेज किसी भी बिन के अंदर कितनी होगी, 16 होंगी. And that makes sense intuitively, and that's exactly what the answer from the expected value would have been. N upon B, 64 upon 4. ठीक है. So this is just me introducing के the expectation किस तरह intuitively देखी जा सकती है. अगर नहीं कर मतलब नहीं समझ आ रहा होगा एग्जाम में, so just BS the expectation खुद से अपनी तरफ से कहते हैं अगर समझा नहीं पा रहे. We actually don't need to show all the steps. मुझे नहीं पता सर कितना पूछना है आपसे steps के अंदर. But if you just simply wrote the expected value is 1 upon B and this and N upon B कर देते, you should have gotten full credit. तो खैर, so the number of balls we expect in bin 1 to be there after n throws is n upon b. अगला सवाल है, how many throws do we have to do before a given bin has a ball? I think that's the question. How many balls must you toss until a given bin contains a ball? हाँ ठीक है. So this is slightly the uh, other side of the equation. अभी हम देख रहे थे कि किसी बिन के अंदर कितनी बॉल्स आएंगी आफ्टर n थ्रोज. अब हम कह रहे हैं हाउ मेनी थ्रोज डू वी हैव टू. Oh, अच्छा अच्छा. So Ibad is saying we have to make B throws. ठीक है. So we'll see how this is the answer. We're saying कि how many throws do we have to make before any given bin has a ball. तो ठीक है. तो on any given throw, let's say we're going to take any arbitrary bin, let's say bin 1. उसी तरह से लेते हैं, ठीक है ना. bin 1 को हम देखना चाह रहे हैं कितनी बॉल्स मैं थ्रो करूं ऑन एक्सपेक्टेड वैल्यू कि इसमें एक बॉल आ जाएगी. तो on average, what is the expected number of balls that goes into bin 1 when I make a single throw? 1 upon b balls, right? ठीक है ना. That ball could have gone anywhere, so there's a 1 upon b chance of it going into there. So 1 upon b multiplied by 1, and you know p minus 1 upon b chance that it goes somewhere else. इसके अंदर इस केस के अंदर 0 होगा वो. So the expected value, so the expected number of balls that go into bin 1 on any given throw is 1 upon b. So how many throws would I have to do to make this value 1? So 1 divided by 1 upon b is simply going to be b, reciprocal करके. So after I make b throws, I can expect the value. I can expect the number of balls in bin 1 to be 1. ठीक है. So अगर मैं आपसे वही सवाल पूछूं लेकिन मैं कहूँ अच्छा screen stuck. Can you guys see my screen moving? I can see my screen moving. तो मेरे ख्याल से हिल रहा है. किसी और का स्टक है तो बताए, वरना I'm gonna assume के रयान का थोड़ा. Yeah, I think रयान आपका है. चलो सही. रयान, अब can you see it moving now? Like I'm scrolling the screen. Can you see the pen? खैर, तो hopefully ठीक है, perfect. So hopefully you understand के how many throws do I have to do before I get one ball in the screen. So if I had asked you how many throws do I have to do before I have two balls in any given bin, what I'd say, acha, I want the number of balls in there to be 2, and on average, when I make a throw, 1 upon b balls goes in there. So 2 divided by 1 upon b is going to be, I have to throw 2 b balls before I can expect कि अच्छा इस bin के अंदर 2 balls होंगी. ठीक है. Now let's get to the interesting part. अभी क्या कह रहे हैं कि how many balls must you toss until every bin contains at least one ball? हाँ, ये मजे का. ठीक है. So now we want to find out कि अच्छा हम चाहते हैं कि balls को फेंकते रहो और हम चाहते हैं कि सारे bins fill हो जाएं. What is the expected number of balls we have to throw until all of the bins are filled? All of the bins have at least one ball.
Now, how are we going to go about this? We're going to say we're going to divide our process into stages. Now, stage 0 is basically अभी कोई भी बिन नहीं भरा, कि basically stage 0 पे 0 bins भरे हुए हैं. And when we throw a ball, we're going to see अच्छा क्या एक नए बिन के अंदर बॉल जाएगी या नहीं, क्या एक नए बिन के अंदर बॉल गई या नहीं. When a ball goes into an empty bin, we are moving closer to our destination. So we're going to call that a hit. A hit is when a ball goes into an empty bin. Okay? On stage 0, what is the probability of making a hit? The probability of making a hit at stage 0 is going to be exactly 100%. So 1. The probability is 1. Because all of the bins are empty. ये ball जहाँ भी जाएगी, ये खाली bin के अंदर ही जाएगी. Stage 2. Sorry, stage 1. Stage 0 होगी. Now we're making the second hit. ठीक है ना? एक एक बिन भर चुका है. स्टेज 1 पर एक बिन भर चुका है. स्टेज 0 पे, so on any stage I पर I bins already have balls. एक या उससे ज्यादा, लेकिन I bins में balls पहले से हैं. I want to see if I'm on stage 1, what is the chance of me making a hit? So for me to make a hit, I have to throw a ball into an empty bin. If there is already one hit made, that means exactly one bin already has a ball. So I can hit any of the other b minus 1 bins. So the chance of me making a hit is actually b minus 1 upon b. Okay? The chance of me making a hit on stage 2. The stage 2 means दो bins भर चुके हैं. I am about to make the third hit. So the chance of me making the third hit is going to be b minus 2 upon b, because the third hit implies that I've already made 2 hits, which means 2 bins are full, बकिया सारे खाली हैं. उनमें से कहीं भी फेंकूं, वहां पर मेरा hit हो जाएगा. So b minus 2 upon b. Is everyone following up till now? ठीक है. So अब हम, अच्छा, this is clear, right? Can anyone say like yes, समझ आ रहा है? When I'm gonna say, because when no one answers, I assume कि अच्छा किसी को कुछ समझ नहीं आया, कुछ कहना नहीं चाह रहा. Understood. बस सही है. Perfect. ठीक है. Perfect. So we've divided our stage. So we divided our process of filling all the bins into stages, where stage I represents के I bins पहले से fill हो चुके हैं. I'm about to make the I plus 1th hit. कि अगर मैं स्टेज 5 पर हूँ कि मेरे 5 बिन भर चुके हैं, आई एम अबाउट टू मेक द 6th हिट. उसका चांस क्या है? अब क्योंकि मेरी आई बिन्स भर चुकी हैं, तो आई ओनली हैव बी माइनस आई बिन्स एम्प्टी. द चांस ऑफ मी मेकिंग अ हिट नाउ इज बी माइनस आई डिवाइडेड बाय बी. ठीक है. सो हाउ मेनी, सो ओवरऑल अगर मुझे हिट्स देखने हैं, कितने चांस होगा मुझे सारे हिट्स करने के लिए? So the expected number of hits I want to make at the end is basically how much? I want to make b hits. ठीक है. सही है. अच्छा, so best way to explain this. Okay, सही है. So x is going to represent the number of tries it took to get to b hits. ठीक है. ये सबको समझ आ रहा है? किसी को नहीं समझ आ रहा बता देना. So x is a random discrete random variable where x represents the number of hits it took to get to b hits. जब मेरे b hits हो गए तो मेरे सारे bins भर गए. ठीक है. x represent कर रहा है कि मुझे कितने hits लगे. हमें क्या ढूंढना है? Expectation of x. कि what is the expected number of hits I made to get b hits. ठीक है. Now the expectation of x को हम पहले बाद में देखेंगे. x को पहले देख लेते हैं. x निकलता किस तरह है? x निकलता है, so I want x represents the total number of throws I did. कब तक? जब मेरे पास b hits हो गए. So if I want to divide this up, I can divide this up into xi up till xb.
where xi represents कि मुझे पहले हिट करने में कितने थ्रोज लगे, कि x1 represents, so hit x1 one, so the first bin took how many, sorry writing थोड़ी खराब है, how many throws. So xi represents the ith hit has happened, और उसमें कितने थ्रोज लग गए, ठीक है, मजीद कितने थ्रोज लगे, ठीक है, वी आर नॉट काउंटिंग द प्रीवियस वंस. So x is going to be the summation of x1 plus x2 plus x3 plus x4 plus x5 all the way till xb. So let's recap. हम क्या निकालना चाह रहे थे, हम निकालना चाह रहे हैं the total number of throws it takes to get b hits, where b hits basically means कि हमारे सारे b bins भर गए. A hit is when you throw a ball and it goes into an empty bin. So we would like to find out x key expectation. So the expected number of throws I make before I get when I get exactly b hits. So b hits होने के लिए पहला hit होगा, फिर दूसरा hit होगा, फिर तीसरा, चौथा, all the way up till bth hit होगा. So x really depends upon कि how many tries did it take make how many tries did it take me, how many throws did it take me to make the first hit, then उसके बाद how many throws did it take me to make the second hit, then how many throws did it take me to make the second hit, and so on and so forth, all the way until the bth hit. So x represents on x1 plus x2. Yep, I बात बिल्कुल सही है, हार्मोनिक्स होगा बिल्कुल. So x1 x2 all the way till xb, ठीक है. Now we'll see कि अच्छा इसकी एक्सपेक्टेशन कैसे निकाली जाएगी. Once again, x depends upon the sum of, I've skipped the linearity वाला step, hopefully आप सब लोग ने कैच कर लिया होगा. xi, ठीक है. So x, where x is b hits होने की throws, depends upon, so the expectation of x depends upon the summation of all the expectations, the expectation of कि x ith hit होने में कितने throws लगे. याद रहे कि xi represents the number of throws it took me to make this hit. Previous वाले में नहीं गिन रहा. When I'm making the ith throw, let's say I'm saying x7 represents कि how many throws did it take me to make the seventh hit करने में. तो 6 hits मेरे हो चुके थे, ठीक है. मैं 7th हिट करने की कोशिश में कितने मुझे मजीद थ्रोज लगे. सो दैट्स व्हाई x1 प्लस x2 प्लस x3 कंसेक्यूटिवली प्रोग्रेस बढ़े जा रहा है हमारा. उसका जब सम करूंगा मैं xb तक, तो मेरे पास ओवरऑल x की वैल्यू आएगी. अब हम देखते हैं किसी इंडिविजुअल, अच्छा पहली बात तो ये है कि अनलाइक द प्रीवियस क्वेश्चंस सारे xi's की एक्सपेक्टेशन सेम नहीं होगी. तो पिछली दफा तो हम क्या कर रहे थे, सिंपली 1/8 1/n मल्टीप्लाइड बाय n कर रहे थे, है ना. यहाँ पर वो नहीं चलेगा because all of them have different values. So x1 is different, x2 is different, x3 is different. And one more thing to notice is that the chance decreases. ठीक है. Now we're actually going to see exactly how much it is decreasing. So let's say I'm about to make the xith throw. Let's look at x5. ठीक है. So fifth hit throws कितने लगे, ठीक है. So x5 represents how many throws it took me to make the fifth hit. इसको थोड़ा सा लिख दूं, ठीक है. एक सेकंड, लेट मी सेव द रिकॉर्डिंग.